Have you ever wondered why political turbulence seems to be a constant companion of Pakistan? Let's embark on a journey together through the maze of Pakistani politics. Once upon a time, Imran Khan, a fallen cricketer turned politician, chanted a mantra for 2 years. "America ousted me through a cipher." The public, fueled by their disdain for America, hoisted him up on their shoulders. It wasn't just love for Imran Khan, but rather the public's hatred for America that propelled this fallen man to the top. Fast forward to today and he's back with nearly 100 seats in the assembly, regardless of their independence. The name on the ballot that people voted for was Imran Khan. Today, Barrister Saif Ali went to meet Imran Khan in Adiala jail and returned with a message for America. The barrister says, "Pressure Pakistan, claim the election was rigged, and demand Imran Khan's return." The barrister also suggests that America has an opportunity to stop supporting corrupt individuals and refuse to accept a rigged election. But why does he say this? Because he wants to fool the innocent public. He wants the naive public to believe that he's challenging America when in reality, he's begging America to bring him back to power. Consider this. Imran Khan handed his entire party over to lawyers. There are no political workers left in Pakistan Tehreek-e-Insaf. Everyone who speaks for the party, everyone who runs the party, they're all lawyers. Pakistan's legal fraternity is notorious. These wolves in sheep's clothing have ruined Pakistan's entire system. In the midst of this chaos, the second big leader of Pakistan, Mian Mohammed Nawaz Sharif, whose electoral symbol may be a lion, but his actions are worse than a jackal's. For the last 15 years we've heard him say, "Respect the vote," but now he's forgotten about the dignity of the vote. He came only to fool the public, and we danced to his tunes. He got all his cases dismissed, escaped disqualification, and now both the public and Pakistan can go to hell for all he cares. So, where should the public go? Who should they vote for? When will someone sincere come for Pakistan? Some win votes by cursing India, some by talking about Kashmir, and some by hurling abuses at America. But when will a sincere leader come for this country? The public is starving for a two-time meal, but when will the country get a sincere leader? In conclusion, the story of Pakistani politics is a complex web of deception, power play, and a constant quest for legitimacy. The public's disdain for America hoisted Imran Khan to the top, but his fall came just as swiftly. Meanwhile, Nawaz Sharif's rhetoric about respecting the vote seems to have been forgotten, leaving the public in a state of confusion about who to trust. The question remains, when will a sincere leader come for Pakistan? Only time will tell. हम जाएं तो किधर जाएं, सिर्फ बेवकूफ़ बनने के लिए रह गए हैं। 2 साल से इमरान खान ने रट लगाई हुई थी कि मुझे अमेरिका ने सफ़र के जरिए बाहर निकाला, तो निचले दर्जे पे गिरा हुआ इमरान खान अवाम ने इस नारे पर इसको उठा के ऊपर कर दिया। सिर्फ इमरान खान की ये मोहब्बत नहीं थी, बल्कि इसमें अवाम की अमेरिका से नफरत थी, और वो गिरा हुआ नीचे इंसान ऊपर चला गया। आज असेंबली में तकरीबन 100 सीटें लेकर दोबारा आ चुका है, चाहे वो आज़ाद ही क्यों ना हूँ। लेकिन नाम तो इमरान खान का है जिसका वोट उन लोगों को पड़ा। आज बैरिस्टर सैफ अली इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करने के लिए गया और वहां से अमेरिका के लिए पैगाम लेकर आया। बैरिस्टर साहब फरमाते हैं, आप पाकिस्तान पर दबाव डालें कि धांधली वाला इलेक्शन था और दबाव डालें कि इमरान खान को लेकर आएं। बैरिस्टर साहब फरमाते हैं, अमेरिका के पास मौका है कि आपने हर दौर में करप्ट और आमरों की पुष्टपनाही की और उनको सपोर्ट किया, लेकिन अब आप ये काम छोड़ दें और धांधली वाले इलेक्शन को कबूल ना करें और उन पर दबाव डालें कि इमरान खान को लेकर आएं। अब ज़रा रुक जाए मासूम से लोगों, ये बात उसने क्योंकि वो अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। बोली अवाम समझेगी कि ये अमेरिका को आंखें निकाल रहा है, असल में वो अमेरिका को समझा रहा है कोई मुझे लाओ, मुझे जो कहोगे मैं वही करूंगा। अरबों रुपए की अमेरिका में इस बंदे ने लॉबन की कि किसी तरीके से अमेरिका मेरे साथ राजी हो जाए, सिर्फ ये इसका रिजल्ट देखना चाहता है। जिंदाबाद वो अवाम जो कल अमेरिका के खिलाफ नारा लगाने पर सारी अवाम इसके साथ हो गई। अब वो अमेरिका की मन्नतें कर रहा है कि मुझे किसी तरह इक़्तिदार में लाया जाए। कभी आपने सोचा कि इमरान खान ने सारी पार्टी वकीलों के हवाले कर दी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई सियासी कारकुन नहीं बचा। जितने भी स्पोकस पर्सन है वो सारे के सारे वकील, जितने भी पार्टी के करता धरता हैं वो सारे के सारे वकील हैं। पाकिस्तान के वकला तबके से कौन नहीं वाकिफ? ये पेंट कोट में छपे वो भिड़िए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सारा निज़ाम बर्बाद किया हुआ है। अगर ये इतने काबिल होते तो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कचहरी निज़ाम ठीक कर चुके होते। पाकिस्तान के अदालती और कचहरी निज़ाम से कौन नहीं वाकिफ? जिसको कभी मसला बना हो वो जानता होगा कि ये क्या हाल करते हैं।
اپنے لوگوں کا ایک وکیل کیس پکڑتا ہے اور دوسرا وکیل بھی ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے، دونوں مل کے دونوں فریقین کو بے وقوف بناتے ہیں، ایک دوسرے کی کیس کی نقلیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، پیسوں کے پیسے ان سے بٹورے جاتے ہیں اور وہ اپنی ساری زندگی ختم کر کے کچہریوں سے نکلتا ہے، ہمارے عدالتی نظام سے سب کچھ اجاڑ کر نکلتا ہے۔ کیا یہ ملک چلائیں گے؟ یہ خدا کی قسم چور ہیں۔ پاکستان کا دوسرا بڑا لیڈر میاں محمد نواز شریف، جس کا انتخابی نشان تو شیر ہے لیکن حرکتیں گیدڑ سے بھی بدتر ہیں، 15 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن اب ووٹ کی عزت بھول گئی۔ میں آؤں گا تو یوں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ جب الیکشن ختم ہوا پھر وہی پی ڈی ایم اکٹھی کر کے رفو چکر ہو گیا، صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے آیا اور ہم اس کے آگے ناچتے رہے، اپنے کیس سارے معاف کروا لیے، نااہلی سے وہ نکل گیا۔ اب عوام اور پاکستان دونوں پہاڑ میں جائیں اور وہ ووٹ کو عزت تو وہ پہلے ہی دے چکا ہے، عام کس طرف جائیں، ہم کس کو ووٹ دیں؟ پاکستان کے لیے مخلص کب آئے گا؟ کوئی انڈیا کو گالی نکال کے ووٹ لیتا ہے، کوئی کشمیر کی بات کر کے ووٹ لیتا ہے، کوئی امریکہ کو گالی نکال کر ووٹ لیتا ہے، لیکن اس ملک کے لیے مخلص کب آئے گا؟ عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے، لیکن اس ملک کو مخلص کب ملے گا؟ یا اللہ ان سیاسی حکمرانوں کو غرق کر دے اور اس ملک کو دنیا میں عزت اور مقام عطا فرما۔